Dear student, today we are discussing the new chapter of the series of Re-NEET examinations 2026. So in this chapter we are talking about the most important chapter, that is current and electricity. And this chapter contribute total 5 question in the year of 2026 JEE Mains examination. Total 5 question asking from this chapter. And first of all, I am discussing about the concept of that question, and then we discuss the question also, so that you understood both of this amalgamation of this, and might be possible in the Re-NEET examination also. Some 3 to 4 question may they ask, because 5 question if they ask in the main examination, then in Re-NEET also same type of concept they repeated. And one more thing is that when I solve the PYQ of this chapter, na, so I show that many of the concepts are repeated in this chapter. Okay, so once I show to you how we can solve the problem. So first of all, when we go with the problem number 1, that is asked in NEET 2026. See this, the year is also mentioning here. Okay, so they say that the resistance is connected with the battery of 12 volt EMF. So actually EMF means the E is given to you. Okay, EMF means the E is given to you, that E is equal to, that is 12 volt. Okay, and the internal resistance is given to, means R is given to you, that is 2 ohm. Okay, if the current is given, that is I is equal to in the circuit, that is 0.6 ampere, then the terminal voltage will be, then what is VT? Formula of VT is equal to E minus IR. From where this formula comes out? This formula comes out from the cell. Okay, see this. This is the electric cell. The concept first you learn about that. So electric cell means the cell will be contribute the one internal resistance and one E, and the total combination of this will be nothing but V. So we can say that in the case of terminal voltage, that is, see this, these are the circuit. Actually circuit is look like this. 1 second, I am making here only. The circuit is look like this. These are the circuit. This is the R, this is small r, this is E. So these are the exact circuit, and this is the VT. So they are talking about only VT part, where I is given to you, that is how much, 0.6 ampere, and R value is given, E value is given. So we can find easily, that is E is 12 volt minus of I is how much, 0.6 into, that is 2. So we can say that 12 minus of 6 2 is 12, that is how much, 1.2. So we can say that 12 minus 1.2 become how much, that is 10.8 volt is the correct answers. So option number D, we can say that that is the correct answer. That is a very simple question. Okay, similarly we are going towards next question. See this question is given to you, a uniform metallic wire having resistance of 4 ohm, okay, and bent in the square loop of ABCD, means this all the part is given to you 1 ohm. These are bent here. This is also 1 ohm. This is also 1 ohm, and this is also 1 ohm. Okay, so this is given to you. Now how we can solve this problem? What are the method to solve this problem? The method to solve this problem is to, we are trying to solve this with a Wheatstone bridge. How we are applying Wheatstone bridge? How can I know about this Wheatstone bridge applied here? Because whenever the 5 resistance is given to you, then always you check it is Wheatstone or not. So this is Wheatstone only, because how we can say Wheatstone? Because this two ratio of these two resistance are same, means this resistance ratio and this resistance ratio are same. So whenever the ratio are same, we can say that it's a Wheatstone bridge. So here, what are the method of Wheatstone? So when the ratio of these two resistance, this P by Q and that is S by R or R by S, we can say that R by S ratio are same, then we can say that it is a Wheatstone bridge. So in this case, what happened? The potential at this point, in this case, the potential at this point will be same. So this R5 resistance will be removed, okay, because the current in this R5 is 0. Why 0? Because potential difference here is 0, because potential at VB minus VD, that is equal to 0. So the current in this loop will be in this path, it become 0. Okay, so according to this, we are saying that this is a Wheatstone bridge. So the next circuit I am drawing here of the same, that is circuit is look like this. This is the point A, okay, and this is the point B. Circuit is look like this. This is 2 ohm,
Okay, so whenever it is the balanced Wheatstone bridge, so what happened here? Okay, this is E is equal to 2 volt given to you. The current they are asking in the question, current is asking. Okay, so this this loop will removed from here. This 2 ohm is removed from here. Okay, whenever the 2 ohm is removed from here, so we can say that this two are in series, that is 2 ohm, and these two are in series, that is 2 ohm. So new circuit will be look like this, that is 2 ohm, 2 ohm, and the potential will be 2 volt. Okay, so what is the total resistance? Total resistance become 1 ohm. So our total become how much? That is 1 ohm. Okay, and the V is equal to how much? 2 volt. So V is equal to IR. So current become how much? 2 by 1, that is 2 ampere. So current in this will be 2 ampere. That is option number, we can say that 1 is the correct one according to the given condition in this question, right? So this is also very simple question. Whenever the fiber resistance is given to you, you always try to check the it is Wheatstone bridge or not. Okay, this is a very important concept. Now we are going towards next question. The next question is given to you from the heat, or the we can say that power formula, right? So we are discussing the heat and power formula because heater is given to you, the rate of heater, this power is given to you, that is how much? 400 watt, and the voltage is given to you 220 volt. Okay, this is the case one given, where if the supply voltage is dropped, means suppose V2 is given to you 200 volt, so they ask you what is the power in this case. Okay, power is given, the option all are in watt, so power is asking to you, right? So in this case we are finding this thing, but before that, first of all, we are talking about the concept of this question, right? So whenever you're talking about the concept, so power formula is that is VI, or we can say that if V is equal to IR put karoge bachche, so that is I square R, or if I is equal to V by R put karoge, so we can say that V square by R square into R. So R cancel out, we can say that V square by R. Okay, this is the formula. So and what is heat here? Heat is equal to power into time, or we can say that I square R into T. This is the formula. Okay, so here we are using this concept because we are using this concept here, power वाला concept हम use करेंगे, ये वाला और ये last वाला formula. Okay, so in this case, first of all, if we are finding the value of R, अगर हम मान लो यहाँ से R का value निकाल ले बच्चे, so what happened here? If I finding R, so P is equal to, that is V1 square by P1 is equal to V1 square by R. Okay, so this is 400, that is 2200 into 2200 divided by R. So R is equal to how much here? That is 400 by 1 upon R is equal to 400 by how much? Divide upon 220 into 220, 0 cancel out, 0 cancel out. This is 11 and 11. So R is equal to, that is 121 ohm. We are getting R is equal to 121 ohm. This is the first case. So same R does not change because in the question they does not say that कि material is changing or the device is changing. तो device तो वही है, अगर device वही है बच्चे, तो R का वैल्यू यहाँ भी कितना होगा आपका? 121 ओम होगा. ठीक है, सो आप फिर फार्मूला, पावर का फार्मूला लगा लीजिए, दैट इज V स्क्वायर बाई R. सो वी कैन से दैट 200 into 200 divided by 121. When you solve this equation, you are getting that is approximate value you are getting, that is 331 watt. So we can say that this option number 3 is the correct one according to the given condition of this question, right? So this question is also completed, and this concept you just remember because similar type of concept are repeated in previous year, okay, many a time. Now when we go with the next question, the next question is related to galvanometer. So first of all, you know about the concept of galvanometer, how the galvanometer is formed, how the voltmeter is formed, what are the use of we can say that ammeter here. So they say that a galvanometer resistance is given to you, so R of galvanometer is given to you, that is 100 ohm. Okay, and full scale deflection, the current in galvanometer is given to you 1 milliampere. Okay, it's converted ammeter of this range. Okay, the range of ammeter means I of given to you, that is 10 ampere. I is given to you 10 ampere. So they say that what is the shunt resistance. So R SH पूछ रहा है आपसे बच्चे. ठीक है, actually how we can form the galvanometer with ammeter, see here, galvanometer को ammeter से कैसे convert करते हैं बच्चे. This is the galvanometer. Okay, and here we are using a shunt resistance.
एक यहाँ पे हम शंट यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस आर द प्रोसेस एंड वेयर आई इज गोइंग हियर, दिस इज द करंट ऑफ आई जी एंड वी कैन से दैट आई माइनस आई जी करेंट यहाँ पे पास होगा बच्चे, और वी कैन से दैट आई शंट करंट होता है ये, ठीक है, और ये दोनों इक्वल होता है। नाउ these are the concept already I showed you. This is the galvanometer. Galvanometer is the device which are used to detect the small current. So galvanometer का जो वैल्यू है ना वो क्या होता है, आई जी इंटू आर जी। दिस इज द वोल्टेज ऑफ galvanometer. galvanometer से एमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे, शंट लगा के, देखो ये शंट है ना यहाँ पे, शंट लगा के एंड द करंट इज आई माइनस आई जी, ये करंट आई जी इधर फ्लो हो गया दिस galvanometer की तरफ एंड द लेफ्ट पार्ट द लेफ्ट करंट विल बी पास थ्रू द शंट, ओके। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, शंट का। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं इसमें, ये भी सीख लो आप, बिकॉज में भी क्वेश्चन आ जाए। तो वोल्ट मीटर बनाते हैं galvanometer के पैरेलल में, सीरीज में हम लगाते हैं एक रेसिस्टेंस को, उससे वोल्ट मीटर बनता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर वाला रेसिस्टेंस है बच्चे, ये हाई वैल्यू का होगा, ओके, एंड galvanometer वाला रेसिस्टेंस लो वैल्यू का होगा, ओके। एमीटर ऑलवेज सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, this is connected in series, and voltmeter always connected in parallel with the circuit to detect the current, okay. Now we are going towards the question. So whenever they ask you what is the resistance of the shunt resistance, okay, so we are doing one thing here. What we are doing here, see this, we can say that in parallel no, voltage are same. So I can say that the I of SH into R of SH, that is equal to Ig into Rg, okay. In parallel voltage are same. So we know about that because इस केस में ना बच्चे आपका जो galvanometer करंट है ना वो बहुत छोटा है, that is 10 power minus 3 एम्पियर है, and the given current I this side current will be how much, that is 10 ampere, okay. So we can say that is I approximately is equal to I SH shunt current के बराबर होगा, that is equal to 10 ampere. Because this galvanometer current is very very small, so I can say that this is 10 into RSH, that is equal to how much, this is 10 power minus का 3 and RG का वैल्यू आपको 100 दिया क्वेश्चन में, देखो RG is equal to 100, so 100. So we can say that RSH is equal to how much, that is RSH is equal to we can say that 0.001 into 100 and divide by how much, divide by 10. So we can say that this is how much, what is the value here, that is 1 upon 100 we can say that, okay. तो that value 0.01 ohm. तो ये देखो बहुत छोटा वैल्यू है, ऑलरेडी आई एम सेइंग टू यू इन दिस केस दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल, लो वैल्यू का होता है, तो दैट्स वाई ऑप्शन भी देखो बहुत छोटा आ रहा है, मीन्स द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन इन दिस क्वेश्चन, okay. The very very small options are correct answers, okay. Clear to all of you, this is correct one, okay. Now we are going to next question, that what are the next question we are talking about, okay. So again see this, till now the 26 year question is going on, so total 5 question asking last year. Now here see the concept, the question is given to you, this is the meter bridge question. So they say that whenever we can say that because galvanometer connected at this point, I am showing you the main diagram also, and battery is connected here to operate this whole circuit, okay. And this distance is given to you, that is L1, and this distance is given to you, that is 100 minus L1. In general the distance will be 100, okay. So this value is given to you, so by the method of Wheatstone bridge we are able to solve this problem, that is very easy, right. But in this case they are exchanging the position of battery and the galvanometer. So what happened here, actually in this case there is nothing happen here. Why? Because the equation are in balance condition. They already say that the meter bridge experiment, the position of cell and galvanometer connected are interchanged, will cell the observing, वो तो galvanometer में क्या observe होगा. Actually galvanometers look like of this, okay. There in the center point 0, this side is -1 -2 -2 -3, and this side +1 +2 +3 are reading are given to you. So whenever you you move this jockey this side left or right side, so galvanometer either reflect on the deflected towards the right or towards the left here. But in this case what happened here, see this, the firstly you know the concept. So actually in the main circuit whatever we are learning in the class, that will be G is connected here with the jockey and the battery is connected with this terminal point, okay. But the point is that whenever you interchange this position and the equation is in balance condition, nothing will be changed here. So according to the given condition of the question, what we can say here, that is we are talking about that in this case
First of all, the position of null point does not change when galvanometer and E are interchange. Okay, so these are the condition we are talking about. Okay, so one left में turn नहीं करेगा बच्चे. There will be no deflection irrespective of position of jockey. Okay, both left and right deflection, it is not possible. Right deflection नहीं, तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर. ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. तो वेन एवर यू चेंज द पोजिशन एंड द इक्वेशन इज इन बैलेंस, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. बट अगर आप ऐसे बोलोगे नो डिफ्लेक्शन in G at balance condition only, balance point. Okay, the galvanometer showing the simple deflection, there is no another deflection in the case of galvanometer in this case. Okay, now we are going towards next question, that is question number this question also asks in, that is NEET examination, but this is the 2025 question. Okay, so we are discussing this question. This is also a very small question, or we can say that first of all see the question. So whenever I am seeing this question, so we can say that in this case the 1 2 3 4 point is given to you, 4 resistance is given. In this case we can say that and this is 5 resistance is given, so we can check the it is Wheatstone or not. So whenever I check the ratio, that's 5 by 2.5, and that is equal to how much? 3 by 1.5. Yeah, 2 by 1, 2 by 1. So it is a type of Wheatstone bridge. So we can say that if we remove this 6 ohm resistance, when we remove this 6 ohm resistance, then these two are in series, that is how much? That is 8, and these two are in series, that is how much? 8, and this is 2.5.53, and this is 4. Okay, 8 and 4. So we can say that the circuit is look like this. This is 8 and 4, and this is 1.5. Okay, this is 5.5, 1 by 3, and one battery is connected here. Okay, these are the circuit. So now we are easily solve this. Whenever you solve this parallel form, this is how much? 8 by 3. Okay, this is 8 by 3. So whenever we solve all the equations, so whenever you solve these two, so this become how much? 7 ohm, and this 8 by 3 plus this 9 by 3, 9 by 3 plus 3 become, ये दोनों को solve करोगे आप, है ना, तो दिस बिकम 3. सो 3 और 7 कितना होगा बच्चे? आर टोटल आपके पास आ गया, दैट इज 10 ओम. ओके, और आपके पास V कितना दिया है? V इज गिवन टू, दैट इज 5 वोल्ट. सो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट. तो करंट कितना आएगा बच्चे? दैट इज 5 बाई 10, दैट इज हाउ मच? 5 बाई 10 0.5 एम्पियर आएगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर D is correct one. So first of all we are doing one thing here. We are trying to check here which is Wheatstone bridge, because 5 resistance is given to you here, and then after we are trying to solve because these two are in series connection and these two are in series connection. So easily we are able to solve the problem. Okay, now we are going towards next question. So next question में देखो, ये इस type of concept ना बार बार repeat होते हैं. This type of concept are repeated many a time. Okay, so we are talking about first when the wire of R cut into 8 equal parts. बच्चे एक वायर को, दैट इज आर ऑफ वायर, तो इसका रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज 8. अब आपको बोल रहे हैं कि इसको 8 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया. सो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, दैट इज हाउ मच? दैट इज आर बाई 8, दैट इज आर डैश. मीन्स आपने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब क्या बोल रहा है बच्चे आपको? this equivalent to resistance and adding 4 of them in parallel. So 4 को आप parallel में add कर रहे हो बच्चे. So parallel combination in each we can say that part, or series we can say that part. We can say that R double dash equal to how much? That is R dash by 4. अब R dash by 4 आप R का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे R dash पे, तो दिस बिकम हाउ मच? R by 32. Okay, now they say that in this they are addition. Okay, and they are connected in series. Now they are connected in series. Okay, so what we can do here, whenever they connected in series, so R equivalent is equal to R dash plus R double dash.
ओके। सो सीरीज में करोगे तो कितना होगा 2 इंटू आर बाई वी कैन से दैट 32 मीन्स दोनों ऐड हो रहे हैं ना, या फिर आप ऐसे ऐड कर सकते हो आर बाई 32 प्लस आर बाई 32, तो यही वैल्यू आएगा, नथिंग एल्स। ओके, सो आप इसको कितना बोलोगे, दैट इज 16 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आएगा, आर बाई 16 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो योर आंसर इज आर बाई 16, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हेनेवर यू सी दिस क्वेश्चन 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। या सो 25 में क्वेश्चन आया बच्चे। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है। देखो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में है, ये वाला दो पार्ट भी पैरेलल में है। सो 4 इंटू 2/6, तो ये 8/3 हो गया, और ये कितना होगा 1 इंटू 3/4, तो ये 3/4 हो गया। ओके, सो नाउ दे आर इन सीरीज। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ये हो गया बच्चे 3/4, और ये हो गया आपका दैट इज हाउ मच 8/3, 3/4 and 8/3. So we are easily solve this question. So first of all I am finding the R total here. So R total become how much, 50 volt, that is how much 25/12 ohm. Okay, and the I is equal to how much, 50/25/12, that we are getting 24 ampere. But in this question they are asking to you what is the current through CD. So we are trying to solve with the current division rule. What is current division rule? Current division rule say that I1 is equal to how much, suppose that this is I1 and this is I2. Okay, so I1 we are finding I1, तो क्या लिखोगे बच्चे, टोटल करंट इंटू द सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज 3 ओम डिवाइड बाई बोथ दैट इज 4. ओके, तो टोटल करंट कितना है 24 इंटू 3/4. सो वी कैन से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, how much, we can say that this is 6 4 24, that is 18 ampere. Okay, and what is I2, you are talking about I2 also. I2 कितना आएगा बच्चे, I2 become total current into जिस पे निकाल रहा है उसके सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज 1 ohm डिवाइड बाई 4. सो वी कैन से दैट 24 इंटू 1/4, दैट इज हाउ मच 6 एम्पियर. तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, 6 एम्पियर आएगा. ओके, अब आप इसको मान लो I3 और इसको मान लो I4. ओके, सो I3 कितना आ गया बच्चे, व्हाट इज I3, तो अगेन I3 जो हमारा करंट है वो कितना होगा बताओ मुझे, जिस पे निकालना है उसके सामने वाला, मतलब 4 इंटू दैट इज 24/6 हो गया ना 6, तो ये कितना आएगा बच्चे 16 एम्पियर आएगा, ठीक. एंड I4 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज उस पर निकालना उसके सामने वाला 2 इंटू that is 24/6, so we can say that 4, that is 8 ampere. So when we solve this I1 and I3, so I net is equal to how much, that is I1 minus I3 with 16 minus that is 18 minus 6, 16, that is 2 ampere. देखो आप कोई सा भी इसमें मेथड लगा सकते हैं बच्चे, है ना. यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, आइदर यू सब्ट्रैक्ट दिस 2, आइदर यू सब्ट्रैक्ट दिस 2, you are getting same value, that is 2 ampere. So current here is 2 ampere. This is also very simple or similar question. Okay, whenever we are going towards next question, this question also asks in Re-NEET examination, so that is 2024, so might be possible this type of concept again repeated here. Okay, so we are trying to solve this problem here, so that you are getting the concept. Okay, so now whenever you solve the question, I saw that this is given to you that in a given figure. Okay, that is in a given figure, that is that the diameter is given to D and the current is given. Okay, so diameter is given, so area is equal to how much, that is pi into D/2 का square, so we can say that pi D square by 4. Okay, this is case 1 I am taken here. So D is given to you and current is given to you how much, that is 100 milliampere. When the diff velocity is given to you V. Okay, Vd is equal to V है बच्चे. Okay, if from the wire. Okay, अच्छा ये पार्ट 2 है. पार्ट 2 में केस 2 में आपको करंट कितना दिया, I2 is equal to given to you 200 milliampere. 200 milliampere. आपको एरिया जो है ना बच्चे, ये A1 है, एरिया कितना, अभी D/2 बोल रहा है यहाँ पे डायमीटर देखो, सो पाई इंटू D/4 होगा, ठीक है. सो पाई इंटू D²/16 होना चाहिए, ठीक है, 16 होगा ये. ओके, ऐसा. एंड वी कैन से दैट व्हाट इज VD इज इक्वल टू, वी डोंट नो, दे आर आस्किंग द सेम थिंग, VD, व्हाट इज VD हियर. ओके, दिस इज I1 and I2 is given to you, so we are simply apply the formula here. Okay,
So we know the I formula, I is equal to NEA VD. Okay, so N and E are similar here, same. Okay, approximately. So we can say that I1 by I2, that is NEA1 VD by NEA2 VD. So this cancel out, VD1 and VD2. So we can say that this is how much, that is 100 by 200 is equal to pi d square by 4 into V. Okay, and pi d square by 16 into that is VD. We have to find VD2. Okay, so this is 1 by 2 एंड पाई डी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे, ये 4 हो जाएगा. ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये ऊपर जाएगा ना, दैट इज़ वी डी टू इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ 8V. सो 8 टाइम हो रहा है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. ओके, सो जस्ट यू नो द फार्मूला, आई इज इक्वल टू NEA/VD. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है जिसमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है. ओके, दिस आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस, इन अ यूनिफॉर्म वायर, मेटलिक वायर, लेंथ L इज गिवन टू यू. ओके, आपको लेंथ L दिया हुआ है और R0 का वैल्यू दिया आपको 10 ओम, मीन्स रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू. नाउ द वायर इज स्ट्रेच विथ 2L. यहाँ पे लेंथ कितना था बच्चे, L था. ओके, नाउ आपका लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया. ठीक, अब बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, आपने एक सर्कल बना दिया. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस विल बी, तो आपसे पूछ रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यार पहले आप ऐसे कर लो ना, दैट इज R1 बाई R2 में रिलेशन निकाल लो. R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 का स्क्वायर होता है एंड रो L2 बाई A2 का स्क्वायर होता है. ठीक है, रो तो कैंसिल हो जाएगा, बट L1 क्या है, L बाई A1 स्क्वायर एंड L2 कितना बच्चे, दैट इज 2L बाई दैट इज A2 का स्क्वायर. सो L कैंसिल हो गया, वी कैन से दैट A2 स्क्वायर बाई 2 इंटू A1 स्क्वायर. ओके, सो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका वैल्यू आएगा, दैट इज वी कैन से दैट इज एन स्क्वायर बाई R0 के बराबर आएगा. जो R1 का वैल्यू आएगा ना, दैट इज एन स्क्वायर बाई R0. एन इज समथिंग लाइक दिस वे, दिस इज द स्क्वायरिंग ऑफ द नंबर ना, एन स्क्वायर बाई दिस. सो वी कैन से दैट whenever we solve the formula, so R1 is equal to how much, we can say that R1 is equal to how much, that is n square R0. तो we can say that 4 into R0. ओके, सो यहाँ से 40 हो जाएगा बिकॉज R0 का वैल्यू 4 है. सो R0 का वैल्यू 4 से 40 हो गया बच्चे. तो आप यहाँ पे 2 सर्कल बना लो और इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो ऐसा. तो ये 20 और 20 हो जाएगा. So they ask you what is the value of R. So whenever you solve this, we are getting same value. Okay, that is 20 by 2 become 10 ohm. So we can say that the R total here is same 10 ohm. R is 10 ohm. Okay, so the option number 1 is correct at this point also. Okay, we are getting the same answer. So first of all we are getting the relation from here, and after getting relation we are easily solve the problem. We can say that after stretching its length up to 2L, we are getting this relation. Okay, this is a very basic relation, we have to know this. Okay, now we are going towards next question. That is, next question is given to you again the concept of Wheatstone, that is the meter bridge. Okay, so next question is, so just a second. So next question we are talking about that. Now in this Wheatstone bridge is given to you. So Wheatstone bridge is work on the principle of Bernoulli theory. That is the meter bridge is work on the principle of Wheatstone bridge only. So this is value is given to you. How much? Suppose this is L1 is given and the second is given to you, that is 40 minus L1. How do I know this? Because length is given to you only 40. So we are taking the formula, that is 4 by L1, 8 by L1, this ratio, and that is 2L by we can say that 40 minus L1. So from this equation we can say that this is 4 से डिवाइड करो, 2 by 3 होगा ये. So ये 80 होता है और माइनस ऑफ 2L1 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 3L1. सो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो L1 का वैल्यू कितना होगा बच्चे, दैट इज 80 by 5. तो ये 16 आता है, 16. ओके, बट एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम द बी से पूछ रहा है ना. सो L from the B is equal to how much, that is 40 minus 16, that is how much, 40 minus 16 करोगे तो 24 आएगा. ठीक है,
14 माइनस 16 24 आएगा. सो वी कैन से दैट 24 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन. ओके, सो हमारा आंसर 24 आएगा बच्चे. ठीक है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है. जस्ट द रिलेशन वी आर पुटिंग हियर, दैट इज R1 R2 L1 L2. सो R1 बाई L1 आप कर सकते हो और R2 बाई 40 माइनस L1 कर सकते हो. ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो. दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई 40 माइनस L1. तो एनी ऑफ द फार्मूला वी आर पुटिंग, बोथ फार्मूला आर करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे. नाउ देखो सिमिलर, ये भी क्वेश्चन भी वही टर्मिनल वेलोसिटी वाला ही है. इसमें क्या पूछ रहा है कि द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर शोन इन फिगर. ओके, द टर्मिनल वेलोसिटी वी आपसे वी पूछ रहा है. तो वी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करोगे आप, वी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर. देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड. ओके, ये 24 में फिर से रिपीट हो रहा है, 26 में आए हुए थे. इसका मतलब क्या बच्चे, दिस मीन दैट कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन द नीट एग्जामिनेशन. ओके, सो आप वी कैसे निकालोगे, वी इक्वल टू 10 दिया आपको ई का वैल्यू, और ये आई इंटू आर है. ठीक है बच्चे, बट पॉइंट क्या है ना कि पहले आपको करंट निकालना है. तो पहले आर टोटल निकाल लो, कितना होगा, दैट इज़ 4 + 1 इक्वल टू 5. ओके, एंड वी आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो आई कितना होगा, दैट इज़ 10/5 बिकम 2 एम्पियर. सो आपके पास आई कितना है बच्चे, दैट इज़ 2 एम्पियर. वेरी गुड, आई इक्वल टू 2 एम्पियर. तो अब आप यहाँ पे पुट कर लो, दैट इज़ वी इक्वल टू हाउ मच, 10 माइनस 2 इंटू आर इक्वल टू 1. ओके, सो ये कितना आ गया बच्चे, दैट इज़ आपका 8 वोल्ट आ गया. तो आपका आंसर क्या होगा, 8 वोल्ट. तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इसके अलॉन्ग जो वी टी है ना, वो कितना है बच्चे, 8 वोल्ट है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 24 में आया हुआ. ओके, नाउ अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, है ना. वायर ऑफ लेंथ L गिवन टू यू, उसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करो. देखो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था. ठीक है, एक वायर है, उसको आपने 100 ओम का, देखो अभी ऊपर में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, 100 ओम का है वायर, उसको आप 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, तो इच पार्ट का वैल्यू कितना होगा, इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज R डैश इक्वल टू R/10, दैट इज 100/10. तो ये 10 ओम आएगा बच्चे, दिस इज 10 ओम. ओके, राइट. सो दे से दैट इन द केस ऑफ दिस द फर्स्ट 5 पार्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड नेक्स्ट 5 पार्ट कनेक्टेड इन पैरेलल. सो जब R सीरीज जो है ना बच्चे, वो फर्स्ट 5 पार्ट है, तो कितना होगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. So whenever the number of, we can say that resistance are same in series, तो we can say that S into R फॉर्मूला होता है. तो N इक्वल टू कितना है, 5 into 10, that is 50 ओम. ओके, एंड व्हाट इज पैरेलल फार्मूला, क्या होता है बच्चे, सेम में दैट इज R/N होता है. ठीक है, तो वी कैन से दैट 10/5, तो 2 ओम आ गया. ठीक है, सो R टोटल कितना होगा, लास्ट में आपको दोनों को कॉम्बिनेशन को सीरीज में जोड़ना है. ठीक है, सो R सीरीज प्लस R पैरेलल अगर आप जोड़ोगे बच्चे, तो वी कैन से दैट इज 50 + 2 इक्वल टू हाउ मच, द 52 ओम इज द करेक्ट आंसर. तो वी कैन से दैट द ऑप्शन विल बी 52 हियर. ओके, according to given question the option is 52 here. Okay, the very easy question. Now we are talking about the, I think, last question here, last question of the day. So in this question we can say that two heat A and B of power rating is given to you. So यहाँ पे भी दो केस लगाएंगे हम, P1 इक्वल टू 1 किलोवाट एंड P2 इक्वल टू हाउ मच बच्चे, दैट इज 2 किलोवाट. ये केस 1 है. केस 1 एंड केस 2 ना, इसके थ्रू आप करोगे तो इजिली वी आर गेटिंग द डेटा, बहुत जल्दी डेटा मिलेगा, एंड देन वेरी फास्टली वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सिमिलर क्वेश्चन है. आगे बोल रहे दोज आर फर्स्ट कनेक्टेड विद द सीरीज एंड देन पैरेलल. ओके, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया. तो पहले बताओ मुझे आपका इसका RA कितना होगा, दैट इज V²/PA. करें, RA इक्वल टू V²/PA. सो वेन एवर RA इक्वल टू V²/PA, सो अगर हम यहाँ पे RA निकालेंगे, सो वी कैन से दैट दिस इज V²/1000 and this is how much, that is RB equal to V²/2000. this is very है ना कॉमन थिंग. देन RA and RE we are getting 1000 and 2000. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है ना बच्चे, वो सीरीज में कनेक्शन है. सो RA प्लस RB करोगे आप, तो क्या लिखोगे, दैट इज V²/1000 प्लस V²/2000. तो एलसीएम 2000 आ गया आपका, और यहाँ पे 3V² होगा. ये पहला इक्वेशन हो गया. अब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करो. तो अगर आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा बताओ मुझे, दैट इज़ 1/R1 इक्वल टू, दैट इज़ 1/V²/1000 प्लस 1/V²/2000. तो आप इसको लिख सकते हो 1000/V² प्लस 2000/1000
वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कॉमन है 3000 हो गया यहाँ पे, वी स्क्वायर कॉमन 3000। सो आप आर पैरेलल को क्या लिखोगे बच्चे, दैट इज वी स्क्वायर बाई 3000, है ना, बिकॉज ये इन्वर्स का वैल्यू था। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर, है ना, दैट इज सीरीज बाई पैरेलल, ऐसे पूछ रहा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट सीरीज इन पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल का वैल्यू क्या लिखोगे, सो दिस इज पी सीरीज बाई पी पैरेलल। ओके, so whenever we write p series and p parallel value, okay, so हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चे, p सीरीज और p पैरेलल का वैल्यू को दैट इज वी कैन से दैट हियर इज दैट इज, अगर इसको डिवाइड करोगे ना तो इसका वैल्यू आपका 2/9 आता है। ठीक है, whenever you divide this second equation and first equation ना, first equation this one, first this one and second this one, so you are getting the value of, okay, series and parallel. This is the first equation and this second equation. Okay, then you are getting the value here is 2:9. So the option is which one, the option number of B will be the correct one here. Okay, so hope so all of you enjoy the session, and in this session we are discussing with new topic, new chapter, the same as the all syllabus we are discussing there. Okay, thank you.